Hi, good evening, everyone. Beta, the aim of this session is to discuss some of the MCQs based out of Solow model. So I'm going to take different MCQs and all of these will be based on Solow model, Solow growth model, right? Okay, let's start. So look into the first question, beta. It goes ahead and it says, in the Solow growth model, it is impossible to have a high savings rate since a higher saving rate is always more beneficial than a lower saving rate. थोड़ा समझते हैं पहले क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी भी अगर हम सोलो मॉडल की बात करते हैं, whenever we talk about सोलो मॉडल, तो उस सोलो मॉडल में जो सेविंग्स रेट है, हमारा एम रहता है कि हम उस सेविंग्स रेट को हमेशा बहुत ज्यादा हाई रखें। पहली बात ये बोल रहा है कि हमें हायर सेविंग रेट प्रेफर करते हैं हम लोअर सेविंग रेट के ऊपर, नंबर वन। और नंबर टू ये बोल रहा है, सेकेंड थिंग दैट इट इज सेइंग इज कि हाई सेविंग्स रेट को अचीव करना इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव हायर सेविंग रेट। ध्यान से रीड करो बेटा, क्या क्या बोल रहा है ये। It is saying number one, it is very difficult, it is impossible to achieve higher saving rate. High saving rate achieve नहीं हो सकता है. And the second thing it is saying is that high saving rate is always preferred over low saving rate. High saving rate, low saving rate के ऊपर prefer किया जाता है. So the correct answer to this question will be false. Why is this statement false, beta? You need to understand that, yes, it is important to have high saving rate in the economy. In fact, when I talk about the Indian economy, अगर मैं इंडिया की इकोनॉमी की बात करूं, तो you would realize that actually in Indian economy in 2008 the saving ratio was very high. इंडिया में savings ratio 2008 में बहुत ज्यादा था. And because the savings ratio in India was very high, that is the reason that Indian economy was growing very heavily. India की जो growth थी, मतलब not 2008, 2007-8 की बात कर सकते हैं. Just before we hit the financial crisis, the world hit the financial crisis. तो इंडिया का जो पीरियड था from 2001 to 2007-8, इसमें हाई ग्रोथ क्यों हो रही थी? We had a high growth rate because there was a high savings rate in India. राइट, अप्रोक्सीमेटली हमने 37% सेविंग्स रेट अचीव किया था. सो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गो अहेड एंड वी हैव हाई सेविंग्स रेट इन द इकोनॉमी. बट ऑल्सो बेटा, वी हैव टू गो अहेड एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इनकम कैन ईदर बी कंज्यूम्ड और सेव्ड. या तो इनकम कंज्यूम होगी या सेव होगी. एंड इफ मोस्ट ऑफ द इनकम इज सेव्ड, अगर सारी की सारी इनकम को हम सेव कर लेंगे तो हमारी जो कंजम्पशन है वो ऑटोमेटिकली लोअर डाउन हो जाएगी. एंड इफ द कंजम्पशन विल बी लोअर बच्चे, तो जो हमारी डिमांड है दैट विल ऑल्सो बी लोअर. एंड इफ डिमांड विल बी लोअर, तो फ्यूचर के लिए इट इज गोइंग टू मीन दैट हमारे को द फर्म्स वुड बी विलिंग टू सप्लाई लेस आउटपुट, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, राइट? एंड जीडीपी विल फॉल ओवर टाइम. तो इट्स नॉट द केस कि हमें हमेशा यही चाहिए दैट वी नीड अ हायर सेविंग्स रेट. ये गलत होगा बोलना दैट वी ऑलवेज नीड अ हाई सेविंग्स रेट, राइट? आर यू गेटिंग इट? बिकॉज इफ एवरीथिंग इज सेव्ड, अगर सारी की सारी इनकम सेव ही हो गई, then there is no consumption. And if there is no consumption, then there will be no demand. And if there will be no demand, there will be no output that would be produced, right? So it is wrong to say that we always prefer a very high savings rate. We need to go ahead and maintain a balance between savings and consumption. हमें सेविंग और कंजम्पशन के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है. सो दिस वुड बी अ फॉल्स थिंग टू से. ये एकदम ठीक बात नहीं रहेगी अगर हम ये बोलते हैं that high saving rate is always more beneficial than low saving rate. This is incorrect statement. Sometimes you need to understand that अगर सारा ही चीज हम सेव कर लेंगे, then consumption will be zero, and if consumption will be zero, then the economy will never prosper. तो ये हो गई बेटा false statement. I hope this is clear to everyone. ठीक है बेटा, अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा. इन अ सोलो ग्रोथ मॉडल विद नो पॉपुलेशन ग्रोथ
and no technological change, consumption per worker will be maximized at the steady state when. Okay, try to understand this thing, beta. Whenever we talk about maximizing consumption per worker, तो मतलब this question is going ahead and it is asking about golden rule of capital. किसके बारे में बात कर रहा है? गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल या गोल्डन रूल ऑफ कंजम्पशन या गोल्डन रूल ऑफ सेविंग्स. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसी क्या सेविंग्स रेट होगी जहां पर आपकी कंजम्पशन मैक्सिमम हो सके. वो कौन सा स्टेडी स्टेट होगा? व्हाट विल बी दैट स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल वेयर योर कंजम्पशन इज एट गोल्डन रूल, कंजम्पशन इज मैक्सिमम. और इसका रूल हमें ऑलरेडी पता है. क्या है बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल? The formula of golden rule of capital can be written as marginal product of capital is equal to the rate of depreciation. Actually हम MPK को equate करते हैं delta plus N से. We equate MPK to delta plus N, right? But beta, because in this case it is given that N is 0. यहाँ पे हमें दिया गया है कि population is not growing. So therefore हम n को 0 approximate कर रहे हैं यहाँ पे and we will get delta. So this is the formula where your consumption will be maximum, golden rule of capital, right? For any information related to the batch, you can go ahead and contact us at 83686 63950. Okay. Okay beta. Now let us go ahead to question number 3. तो बेटा ये formula बहुत important है. Sometimes direct application of this formula will come in exam. So you have to remember how to go ahead and how to use this formula. It is very, very important. आपको ये formula को अच्छे से समझना जरूरी है. Okay बेटा, now let us go ahead to question number 3. एक बार ध्यान से देखो question को. What it is saying? It is saying a permanent change in the growth rate of total output can arise from a change in. ठीक है, तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पे इस पे फोकस करना है एंड द वर्ड दैट वी नीड टू गो अहेड एंड फोकस ऑन दैट इज बेटा परमानेंट चेंज. व्हाट इज दैट? इट इज सेइंग परमानेंट चेंज. और परमानेंट चेंज किस में बच्चे? इट इज सेइंग परमानेंट चेंज इन ग्रोथ रेट. परमानेंट चेंज इन ग्रोथ रेट. तो नाउ जस्ट गो टू द डायग्राम वंस. अगर मैं थोड़ा सोलो मॉडल के डायग्राम की बात करूं, देन यू नीड टू रियलाइज that we have something like this, right? I can go ahead and say that this is going to be my depreciation plus N, right? And this is going to be my S times Y, matlab savings. And wherever we have S into Y is equal to depreciation plus N, yahan se jo capital hame aata hai, that is known as the steady state of capital. That is called as the steady state of capital. So beta, we can go ahead and we can say that this K star, this is my steady state of capital, and steady state is achieved wherever the S into Y, that means the amount of saving, is equal to delta plus N, is equal to delta plus N. Huh? So now an important thing, अच्छा into K लिख लेते हैं यहाँ पे बेटा. Now an important thing that you need to go ahead and you need to recognize here बच्चे, that whenever savings rate will increase, जब भी savings बढ़ती हैं, it actually causes a level effect, right? Savings will always cause a level effect. So savings के बढ़ने से क्या होगा ना, the level of output will increase, but there will not be any increase in the growth. देखो ध्यान से, try to understand this thing. अगर मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को zoom करूं, and I go ahead and I increase the rate of savings and I go to a higher savings rate. Suppose ये हो गया S dash Y, it's a higher saving rate. So the level of capital will increase. Capital बढ़ेगा तो level of output will also increase. तो capital और output तो बढ़ रहे हैं, but that is going to be a level effect, right? So it cannot lead to a growth effect. That would be incorrect to say. Similarly, beta, ratio of capital per worker, no. अगर कैपिटल पर वर्कर बढ़ता है, दैट मीन्स इफ स्मॉल के इंक्रीजेस, तो आई कैन assume that there will be some level effect on output, right? But it will not lead to growth effect. So this is also incorrect. Number of workers, बेटा number of workers के change होने से nothing is going to happen, because मैं सिर्फ वर्कर के increase या decrease की बात कर रही हूँ, population के growth की बात नहीं कर रही हूँ. So this is also incorrect.
So the only thing that can go ahead and that can cause a permanent change in the growth rate of your output is technological progress. Huh? The only thing that can go ahead and bring growth effect वो है technological effect, right? तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, समटाइम्स जैसे बेटा दे विल गो ahead and they will tell you something like this कि assume that your technology is growing at the rate of n or at the rate of g. यूजुअली बुक्स में g यूज किया जाता है फॉर ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो यू नीड टू रिमेंबर कि इसी रेट से आपका टोटल आउटपुट भी ग्रो होगा. दैट विल बी द ग्रोथ इफेक्ट. सो आंसर विल बी ए. ओके बेटा, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. तो ये क्या बोल रहे हैं, when investment per worker is greater than the amount of capital per worker. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल से ज्यादा है. That depreciates, including the depreciation. Try to read the question. Investment is more than depreciation of capital during the same period, then it must be the case that. ठीक है बेटा, पहले इसको हम थोड़ा सा प्लॉट करके देखते हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. बेटा यहां पे मैंने ले लिया है डेल्टा प्लस एन के, यहां पे हमने ले लिया है एस टाइम्स वाई. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी सेविंग्स है एंड इन्वेस्टमेंट है, दे आर इक्वल टू ईच अदर. सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल टू ईच अदर. बेटा सेविंग इज सम प्रपोर्शन ऑफ इनकम. तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट विल बी सम प्रपोर्शन ऑफ इनकम. ये मेरी इन्वेस्टमेंट है. अब क्वेश्चन ये बोल रहा है दैट हम किस पॉइंट पर हैं बच्चे, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन इज गोइंग अहेड एंड सेइंग that your investment per worker, it is more than amount of capital per worker that depreciates during the same period. तो माने if I need to go ahead and show it in this diagram, अगर मैं इस diagram को थोड़ा सा zoom करूं, so I can go ahead and I can note this point by point say here. ये वाला capital ऐसा कुछ हो सकता है. बेटा what is this point, देखो ध्यान से. If I just try to note this down, this is the point where I can go ahead and say कि यहां पर ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज कमिंग फ्रॉम दिस कर्व, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ माय डेप्रिसिएशन. सपोज n is 0, because the question is not talking about n. So let's say n is 0. If n is 0, then this is the amount of my depreciation, right? This is the amount of my depreciation, and this is the amount of my investment. And you can clearly see better that investment is more than depreciation of the capital. Clear? This is what the question is giving. This is the premise of the question. Now, the question is saying what will happen over time. So if you realize, beta, what should happen over time, it is very clear that my steady state is achieved at this point, at K star star. My steady state is achieved wherever the investment and depreciation become equal to each other. So this is my steady state. And currently, कहाँ पे है मेरी economy बचे? Economy is here, इस point पे economy where investment is more than depreciation. तो what will happen over time? Over time क्या होगा? There will be an increase in the amount of capital. हमें ये दिखेगा that over time the amount of capital will increase. Am I clear with this? Yes. तो देखो यहाँ पे we need to go ahead and see क्या बोल रहा है point A. The steady state level of capital per worker is larger than current level of capital per worker. Yes. Steady state level तो ज्यादा दिख रहा है. Steady state level of capital is this, और currently economy is at K star. So yes, this is true कि steady state level of capital per worker, it is more than the current level of capital per worker. So we know that over time the capital in the economy will increase. Over time economy का जो हमारा capital है वो बढ़ेगा. That is the correct statement. Am I clear with this? Very important questions बेटा. ठीक है, आगे देखो, next question देखो. It says in the Solow growth model and assuming steady state, the larger the savings rate holding everything constant, and these options are given to you, higher will be consumption, higher will be steady state level of output, greater will be the change in capital, lower the depreciation. तो क्या बोल रहे हैं बच्चे? It is saying what happens when savings rate is larger. Question बोल रहे हैं क्या होगा अगर savings rate larger हो जाए. So let me just try to make a diagram for this also.
देखो ध्यान से जरा, आई एम सेइंग, फिर से बच्चे मैंने यहाँ पे ले लिया डेप्रिसिएशन प्लस एन के, एंड हियर आई हैव गॉन अहेड एंड टेकन सम अमाउंट ऑफ सेविंग्स. अब क्वेश्चन इज सेइंग दैट द सेविंग्स रेट इज लार्जर. तो मैं क्या करूंगी, एक और डायग्राम बना देते हैं, एंड आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड मेक द डायग्राम with the larger amount of savings, with the larger amount of savings. So I am making another diagram बच्चे, and ये हो गया larger amount of savings के साथ. Clear? अब ध्यान से हमें ये बात देखनी होगी that when savings was SY, तो equilibrium आ रहा था इस level of capital पे, and when savings is S dash Y, तो equilibrium आएगा इस level of capital पे. So when my savings rate is higher, तो व्हाट डू आई रियलाइज, आई रियलाइज कि जो हमारा स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल होगा दैट वुड आल्सो बी हायर. सो माय स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल वुड बी हायर. स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल वुड बी हायर. बच्चे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पर ना दिस इज सम प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट. कैन यू सी दिस? सेविंग्स आर सम प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट. So my production function, अगर मैं एक ऊपर production function बना दूं, say I make this as my actual production function. So you need to realize that when capital will be K, then from the production function, my output will be this Y. And when capital will be K dash, so from the production function, my output will be Y dash. So when my steady state of capital is more, जब हमारा कैपिटल ज्यादा होगा स्टेडी स्टेट पे, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो हमारा आउटपुट आएगा एट स्टेडी स्टेट, कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट एट स्टेडी स्टेट, दैट विल ऑल्सो बी हायर. वो भी ज्यादा आएगा, दैट वुड ऑल्सो बी हायर. एम आई क्लियर विद दिस बेटा? लेट मी जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस अगेन. एक बारी हम दोबारा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो. व्हाट एम आई सेइंग? I am going ahead and saying that assume that यहाँ पे बच्चे हमने लिया है डेल्टा प्लस एन के. हमने एक प्रोडक्शन फंक्शन ले लिया, दिस इज माय प्रोडक्शन फंक्शन वाई. सेविंग्स आर सम प्रपोर्शन ऑफ द इनकम. जितना भी इनकम होता है उसी का कुछ प्रपोर्शन सेविंग होता है. अब ये बोल रहे हैं कि दो सिनेरियोस कंसिडर करो, वन विद लो सेविंग्स रेट एंड वन विद हाई सेविंग रेट. सो व्हेन सेविंग्स रेट इज लो बच्चे, देन दिस इज माय सेविंग्स फंक्शन. And when savings rate is high, suppose, then this is my savings function S dash Y. ये हो गया lower rate savings का, and ये हो गया higher rate saving का, right? So if my rate of saving is low, suppose my rate of saving is low, so my equilibrium level of steady state of capital will be here. And if my rate of saving is high, then my equilibrium level of capital will be here. जब स्टेडी स्टेट के डैश आएगा, तो इट विल गो अहेड एंड इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू दिस लेवल ऑफ आउटपुट. आई एम गोइंग टू द प्रोडक्शन फंक्शन. एंड व्हेन स्टेडी स्टेट विल बी के डबल डैश, then it will correspond to this level of output. I am going to Y double dash. So higher the savings rate, higher is the steady state of capital, higher is the level of the output. Am I clear with this? तो what does this imply? इसका क्या implication है? It implies that whenever your savings rate will be higher, that will be actually met with higher level of output per worker. So the correct statement of this question should be B. When my savings rate is higher, my output per worker at steady state will also be higher. वो भी ज्यादा ही होगा, right? Okay, beta. Let us go ahead to the next question now. Next question. It says in the Solow growth model, the steady state level of capital per worker occurs when? So what is steady state, beta? क्या होता है steady state? Let me just try to explain you this one once. To try to understand this thing, कि we have something which is known as equation of motion. अब Solow growth model क्या कह रहा है? It says the capital at period t plus 1 is equal to last year's capital minus depreciation of capital plus investment. Yeah. Now what we go ahead and we do is that we try to write this equation in per capita terms. हम इसी equation को per capita terms में लिखते हैं.
So to write this equation in per capita terms, we divide throughout by the level of the labor. Right? Investment is so investment is equal to savings, and savings are some proportion of income. So yahan par na I can write this as some proportion of income also. Right? This is how we go ahead and we do this. Now suppose अभी के लिए एक generalized case लेते हैं और मैं assume कर रही हूं कि पिछले साल का लेबर और इस साल का लेबर बराबर के हैं. I am just assuming that last year's labor and this year's labor is equal to each other. तो बच्चे what I can do ना, ये LT plus 1 को LT, LT plus 1 को LT और LT plus 1 को LT में replace कर सकती हूँ, assuming that this year's labor and last year's labor is the same. दोनों labor बराबर के हैं, they are the same. So this portion will be converted to KT plus 1. This will be KT minus delta small kt plus SYT. Plus SYT. अब steady state बोलता क्या है? What does steady state go ahead and say? So a steady state is that state at which your capital does not change. तो आपका जो last year का capital है और इस year का capital है, they should remain the same. That is called as steady state level of capital. So we can keep them equal to some K star. So steady state level of capital is that level of capital such that capital does not change over time. Capital हमेशा same ही रहता है. So if that is the scenario, तो ये KT plus 1 भी K star बन जाएगा, right? और ये KT भी K star ही बन जाएगा. So what I can go ahead and do ना, that I can replace this also with K star. इसको भी हमने K star बना दिया, and I can replace this with K star and this with K star. Am I clear with this? And this will cancel out, and मेरे को मिल जाएगा delta K star is equal to S phi star. माने जितना depreciation है उतना ही saving है at steady state level of capital. Now let's go back to the question. एक बारी हम question पे वापस चलते हैं. So what is the question saying? It is saying the steady state level of capital per worker occurs at, तो कहां पे होगा steady state level of capital? Wherever the savings and the depreciation are equal, या investment and depreciation are equal. So ideally what is steady state saying? Steady state level of capital is that level at which capital remains unchanged. At which capital remains unchanged. And when will capital not change? बेटा कब capital change नहीं होगा? जब जितना invest कर रहे हो और जितना depreciate हो रहा है वो बराबर के हैं. Whatever you are investing and whatever is the depreciation, if the two are exactly equal to each other, तभी तो capital unchanged रहेगा. So steady state level of capital can actually be defined as that level where investment and depreciation are equal. दोनों चीजें एकदम बराबर की हैं. So the correct answer to this question will be C. The level of investment per worker and amount of depreciation are equal to each other. So beta correct answer to this question can be written as C. C is the right answer to this question. Okay beta, come to the next question. देखो ध्यान से. In the Solow growth model, okay, holding everything else constant, increase in the rate of depreciation will lead to. फिर से बेटा we will start with the diagram. शुरुआत हम हमेशा diagram से करेंगे. तो I will start by plotting a diagram of this. Okay. Let me just create some space here. So try to see that. Suppose beta this is delta plus n. This is my savings. Wherever savings and your depreciation plus growth of labor will meet, जहां पे इन दोनों का intersection है, that is your steady state. ये मेरा steady state है. अब क्या बोल रहे हैं question? Question is saying there is increase in the value of delta. तो बेटा when delta will increase, this curve will shift upwards. Delta बढ़ रहा है. So this curve, I am trying to shift this upwards. It will still pass through the origin. क्यों बेटा?
क्योंकि देखो अगर कैपिटल 0 है तो डेप्रिसिएशन तो 0 ही होगा, राइट? इफ कैपिटल इज 0 डेप्रिसिएशन विल बी 0, तो यहाँ पे तो ये 0 ही रहेगा, बट इट विल जस्ट पिवट अपवर्ड्स। ये हो जाएगा हमारा न्यू कर्व, विच आई कैन गो ahead and call as डेल्टा डैश प्लस एन के, मतलब फॉर हायर लेवल ऑफ डेप्रिसिएशन ये वाला कर्व हमारे पास आ गया। वी हैव गॉट दिस कर्व। नाउ वेयर इज माय इक्विलिब्रियम इन दिस केस बेटा? माय इक्विलिब्रियम इज वेयर दिस न्यू डेप्रिसिएशन मीट्स द रेट ऑफ सेविंग, जहां पे अब इंटरसेक्शन हो रहा है, एंड दैट विल बी फॉर अ लोअर लेवल ऑफ कैपिटल। तो द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज when depreciation will increase। और ये इंट्यूटिवली इट मेक सेंस ना, अगर कैपिटल ज्यादा डेप्रिशिएट करेगा तो एट स्टेडी स्टेट आपके पास कम कैपिटल ही तो बचेगा, यू विल बी लेफ्ट अप विद लेस कैपिटल बिकॉज डेप्रिसिएशन इज मोर, कैपिटल ज्यादा रेट से गिर रहा है, राइट? सो दिस मेक्स एब्सोल्युटली सेंस दैट व्हेन डेप्रिसिएशन विल इंक्रीज द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज। सो वी कैन गो अहेड एंड से that the correct answer to this question will be A, decrease in the level of steady state per worker, right? Okay beta, come to the next question. It says in the Solow model with technological progress, ठीक है, an increase in the rate of technological change will, okay, अब देखो ध्यान से बेटा, दिस इज अ मॉडल विद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तो डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा। लेट अस ट्राई टू मेक द न्यू डायग्राम नाउ। तो दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा प्लस एन प्लस जी। अब तीन फैक्टर्स आ गए, डेल्टा प्लस एन प्लस जी टाइम्स के, राइट? एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो गया है, and this is same beta s into y, and this is currently my steady state, ye mera bhi steady state hai, right? Now what is the question going ahead and saying? Let's try to read the question. It says increase in the rate of technological change will, matlab the g value is increasing, right? The value of g is increasing. Okay, so when beta g will increase, so what will happen to this curve? This curve should shift upwards. So first thing that is clear is that when this G will increase, my steady state level of capital will decrease. My steady state level of capital will decrease. Now let's look into the option. Options kya bol rahe hain? It will shift the level of investment curve upwards. No. But what is investment? Investment curve is nothing but the savings curve. Saving or investment barabar ke hain. And you can clearly see that I have not touched my savings curve. That has remained unchanged. So I am not touching my savings curve. So option A is incorrect, right? Option A is incorrect. It will shift the investment curve downwards. No, I will not shift my investment curve at all. क्योंकि investment curve में कहीं पे भी G आ ही नहीं रहा है, right? So the correct answer is C. It will leave the investment curve unchanged. The curve that I went ahead and I changed, beta, that is this curve. मैंने इस curve को change किया है, इस curve को upward shift किया है, and this curve actually goes ahead and represents delta plus n plus g times k. So when g increased, तो ये मेरा new curve आ गया, delta plus n plus g dash times k. But this curve is unchanged. The savings curve is unchanged. Or savings and investment are equal. So nothing is happening to the savings or investment curve. That will remain unchanged. Okay, beta. Let's go to the next question now. In the Solow growth model with population growth and technological progress G, the steady state growth of output per worker is. ठीक है, तो you are given n, population grow रहा है, you are given technological growth rate. It says steady state growth rate of output per worker. Okay बेटा, very good question. देखो, इसके लिए I will request every student who has access to my course, बेटा वहां पे please go to the intermediate video lectures
एंड ना एक बारी आप वहां का सोलो मॉडल में जो मैंने टेबल बनाया है फॉर डिफरेंट केसेस, प्लीज रेफर टू दैट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अच्छा अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सी, whenever we have a case in which we have population growing at the rate of n, population grow कर रहा है at the rate of n, and at the same time बेटा टेक्नोलॉजी भी ग्रो कर रही है at the rate of g, तो उस केस में the exam can ask you many things. It can ask you the growth rate of output, number one. Number two, it can ask you the growth rate of output per worker. That's number two. And number three, it can go ahead and ask you the growth rate of output per effective worker. Per effective worker. So in exam, three things can be asked. जब भी आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, growth rate of output, full total output, growth rate of output per worker y by L, and growth rate of effective output per effective worker, हाँ includes हो y by AL, ये तीनों ही चीजें आपको पूछ सकते हैं। Now, whenever it asks you about the growth rate of output per worker, so we know that output per worker will grow at the rate of the technological growth rate. So the correct answer to this question will be C, right? Output per worker will grow at the rate of technological growth rate. Beta, iske liye you need to remember that entire table. और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ रेट है जी। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन, यू विल टेल मी कि एट व्हाट रेट द टोटल आउटपुट ग्रोस, इज इट n प्लस जी और इज इट 0? इन दोनों में से क्या वो होगा, यू विल गो अहेड एंड यू विल टेल मी दैट, राइट? ओके बेटा, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It goes ahead and it says, suppose that production function is given to you. क्या production function दिया है? Y is equal to A function of labor and capital. The share of capital and output is 0.5. So beta, whatever is the share of capital na, that becomes the power of the capital. जो भी share of capital होगा. So if it says that the share of capital and output is 0.5, तो capital की power हम 0.5 कर देंगे. Then it goes ahead and says that suppose output increases by 4%. Okay, so growth rate of output is given to you as 4%. Labor force increases by 3%. Growth rate of labor is given to you as 3%. And capital stock increases by 2%. Growth rate of capital grows by 2%. Find the Solow residual. ठीक है, okay. So I will just assume that my model is this. क्योंकि बेटा मॉडल जो होता है सोलो मॉडल में, we know it is a constant returns to scale model. The power has to sum up to 1. And हमें already बता दिया गया that the power of capital is 0.5. So we can therefore go ahead and say that the power of labor will be 0.5, right? Okay. Now, so now I will just go ahead and I will take a bigger sheet to solve this question. थोड़ा बड़ा question है. So what we can do now, we can go ahead and we can say that y is equal to a k to the power 0.5 l to the power 0.5. And अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, we can take log on both sides. तो देखो log y will be log a k to the power 0.5 l to the power 0.5. Now what we can do is we can use the property ki log mn is log m plus log n and log m to the power n is n log m. ये दो properties I will go ahead and I will use this. ये दो properties को हम use करेंगे. तो जब हम ये दो properties use करेंगे बच्चे, क्या मिलेगा? log y is equal to log a plus log k to the power 0.5 plus log l to the power 0.5. ठीक है बेटा, तो मिल गया हम बच्चे log y
is equal to log A plus 0.5 log K plus 0.5 log L. राइट बेटा? अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं ना बेटा, मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूंगी थ्रू आउट. तो आई विल गेट 1 by y dy is equal to 1 by a dA plus 0.5 1 by k dk plus 0.5 1 by l dl. बेटा ये हो गया ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, ग्रोथ रेट ऑफ ए, 0.5 ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, 0.5 ग्रोथ रेट ऑफ लेबर. बस नाउ वी कैन जस्ट गो अहेड एंड प्लग इन द वैल्यूज. तो हमें ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट दिया हुआ था 4%, GA. ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल वाज गिवन टू अस एज 3%, GL was given to us as 2%. बेटा ये this is called as Solow residual. इसको क्या बोल देते हैं हम? Solow residual. This is called as Solow residual. तो बस इसका वैल्यू निकालना है. तो we can find GA क्या हो जाएगा बच्चे? 4 minus, so this is going to be 0.5, ये हो गया 1.5. तो our Solow residual will come out to be 1.5. Clear? So that's the answer to this question. Right, beta? So with this, I will end this question, this session. I hope that this session was useful to you. I tried to cover all possible questions of Solow model. And we will again meet tomorrow and we will take some other topic and we'll try to do some MCQs based on that topic. Okay, beta. Thank you.